Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video. This video I have tried to film before and I think I failed, so I'm doing it again. But it is going to be my review of the Veet Sensitive Touch Beauty Trim. A lot of different opinions out there about this trimmer. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. This is what I think about it. I don't know अगर ये किसी और के लिए इसने काम किया है. If not, I'm not sure. Everybody has different opinions about different products. So this is my opinion. This is my review. You can either love it, you can either hate it. But let's go and start reviewing this product. It comes in this box. And this box contains the trimmer and other accessories. Okay, so this is what the box looks like. So this box includes this pack and instructions that fell on the floor. मगर आप अगर इस product को पहली दफ़ा इस्तेमाल करें, then make sure you are reading the instructions because it is necessary for you to read them. So now that you take this thing out of the box, इसके अंदर जिसके आप देख सकते हैं product है, which is the actual trimmer and it has the blades. Then it comes with the other trimmer head जो कि बड़े area को cover करता है. I'll show you that in detail. और it comes with a comb और actually दो combs के साथ आता है क्योंकि दो trimmer heads हैं और एक cleaning sort of चीज़ है which you can use to clean the blade and I think that's the most handy item in this bag. Also ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इसके अंदर बैटरी थी जो कि मैं पहले से अपने ट्रिमर के अंदर डाल चुकी हूँ. फोकस ऑन द ट्रिमर. इफ़ यू रोटेट द ट्रिमर यू कैन सी कि बैटरी मैं अंदर डाल चुकी हूँ. जब नया परचेज करेंगे तो बैटरी अलग से होगी. वेरी इजी टू पुट इन. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, दिस इज़ वाटरप्रूफ सो यू कैन यूज़ दिस इन द शावर. इट विल नॉट ब्रेक और कैच फायर, तो कम्प्लीटली सेफ है, वाटर रेजिस्टेबल है. Although I don't think you should open the battery bit in the shower क्योंकि I think वो proper नहीं होगा, but you can use this product in the shower. It works pretty well. And you press this button and this is how the trimmer turns on. एक आवाज़ है which you can see. Now if we look at the trimmer then you can see the top part has the longer blade and the bottom part has the shorter blade. Shorter blade is used to trim those hair जो कि आपके छोटी areas पे होते हैं, like for example the underneath the eyebrow, maybe this area if you want to use it there. और जो बड़ा वाला blade है उससे आप बड़ा area cover कर सकते हैं. For example you can do your upper lips. And what I like to do is I like to use this in the opposite direction of the hair. जब मैंने शुरू इस्तेमाल करना शुरू किया था, like when I used it for the first time, I used it in the same direction and that does not help. You use it in the opposite direction. जैसे आप wax करते हैं, when you wax you do it in the opposite direction. So same mechanics, same physics. Best thing about this head is that कि आप इसको rotate कर सकते हैं however you like it. तो जिस direction में आपको shift करना है, like for example आप इस eyebrow को कर रहे हैं so you probably want it in this direction. आप इस eyebrow को कर रहे हैं then you want it in this direction. Like आप इसको adjust कर सकते हैं, which is amazing. I think it's very handy when you can do that. So just follow the steps that I'm telling you and honestly you will be left with really good results. As you can see मेरी eyebrows जो हैं वो काफ़ी अच्छी even लग रही हैं. थोड़ा सा practice चाहिए होती है but then हाथ set हो जाता है. Now one more functionality जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वो ये है कि if you twist this trimmer head comes off and bigger trimmer head looks like this and this has obviously more it has a bigger surface area for blades. It just pops on and you rotate, twist and it's on. So now this is what this trimmer looks like. Again you can use this on your hand like so. Let's do a patch test. Is it coming off? But can't really tell. You can see कि इस blade के ऊपर मेरे बाल आ गए हैं. You have to be obviously little patient because your hand is a big area और wax करने में भी obviously time लगता है, so trim करने में भी उन बालों को time लगेगा. Now you can use the trimmer heads exactly the way they are या फिर आप इसके ऊपर एक comb type surface लगा सकते हैं जो कि इस product के साथ आता है. This is what the comb looks like. It attaches on like so. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिकिनी एरिया पे, अपने अंडर आर्म्स पे. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी फैमिली फ्रेंडली और कंटेंट को फैमिली फ्रेंडली रखते हुए आगे बढ़ते हैं. राइट, नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस ट्रिमर हेड, इसके साथ भी एक कोम मिलता है एंड यू कैन जस्ट पॉप दिस और ड्रॉप इट
You can just pop this on and ये again एक comb की शक्ल ले लेता है this product. Now what this is for trimming the eyebrows. Now for example अगर आपके बालों eyebrows के बाल जो कि आप कट करते हैं कैंची से, you can trim with this. So just comb them down and move this in the direction of the hair and it will help in trimming down the hair. So one thing that I have noticed about this is that you have to be a little careful because अगर आप बहुत heavy hand से करते हैं then this can sparse out your eyebrows and you wouldn't want like uneven eyebrows, you would want proper thick eyebrows. तो बहुत हल्का हाथ रखना है and just move in the bottom direction of the hair. You can see the top part now is looking a lot better now that I've gotten rid of the hair. The first time round that I used it मैंने थोड़ा heavy hand कर दिया था and I started losing a little bit of hair. So my advice to you would be keep a very light hand. Alright, I personally really like this product. I wouldn't use this every day but I think अगर आपकी बहुत fast paced life है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लर जाके अपनी आईब्रोज बनवाएं, अपर लिप्स बनवाएं, वैक्सिंग कराएं या फिर आपको किसी दावत में जाना है, यू हैव टू वेयर सम क्लोथ्स जिसमें आपको वैक्स की ज़रूरत है, देन यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड ट्रिम आउट द हेयर इन द अनवांटेड एरियाज. द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि ये शेवर की तरह आपके पोर्स को कोर्स नहीं करता. अक्सर अगर आप नोटिस करेंगे शेवर से इनग्रोन हेयर निकलते हैं एंड आई हैव नॉट नोटिस दैट विद दिस येट. सो दैट इज़ अ वेरी गुड plus about this product. I haven't seen ingrown hair which you get after shaving. It's very soft on the skin, like it doesn't feel कि आप अपनी skin पे blade लगा रहे हैं. बहुत silky smooth इसका surface है and it doesn't really feel anything. It doesn't irritate my skin. मेरी skin बहुत sensitive है and usually अगर मैं thread कराती हूँ then I get like whiteheads on my face after using this. I haven't had any sort of thing on my face like that. This product is available at daraz.pk and you can use my code which is Anushae loves Veet and you will get a discount on this which is a good discount that you can avail. Discount की details मैं description box में लिख दूँगी, so don't forget to read that. And if you have any questions आप description box को खोल के ज़रूर पढ़िएगा. आपको सारी information product कैसे order करना है, कहाँ से order करना है, कितने का order है और क्या discount code है, you can get all of that information. इस code पे the first 25 people to use this code will get the discount. Now I hope you enjoyed this review. If you did, make sure to give it a big thumbs up, subscribe to my channel and I hope आपको ये review पसंद आया हो. Leave your thoughts in the comments down below. If you have any further questions about this product, I will be happily answering them in the comments. And now I will see you in my next video. So bye.